Hello students. Today's our topic is Bloch theorem. In this video, I have only discussed about the Bloch theorem statement, and so we are going to start with the Bloch theorem. Bloch theorem कहाँ पर है, किसके लिए proof है, किसके लिए दी गई है, इसको पहले discuss कर लेते हैं. So as we know that this is the statement of Bloch theorem. Bloch theorem states that the solution of Schrodinger wave equation for an electron moving in a periodic potential are the plane waves modulated by the function having the same periodicity as that of the lattice. And lattice is nothing but it is a array of the atom or arrangement of the atom in a sequence inside the solid. So as you know that by the band theory that electrons inside the crystal, electrons are moving in a periodic potential well. And this periodic potential well having a constant potential energy at a certain level. Well, and suppose that the interatomic distance, or we can say that the lattice distance between these two atoms is a. Okay, so in this condition, Bloch theorem gives us what? Bloch theorem gives us the Schrodinger wave equation solution for an electron, which is moving where inside this potential periodic potential well. Okay, so periodic potential well, and when we are discussing it, then you are saying that, ma'am, we know that we have already did the solution of Schrodinger wave equation for one dimensional potential well. So that is only for the one dimensional potential well, but here Gauss theorem gives us the solution for the periodic potential well, means not inside the one well only. There is a sequence of the well which having a periodic potential. Okay, so periodic potential, you know that thing that after some time period the potential repeat itself. It means that potential is known as a periodic potential. So now we are going to suppose an electron passes along a x direction in a one dimensional crystal having the periodic potentials v x is equal to x plus a. Suppose that your electron is here and the position of this potential well is equal to x, and the electron is moving in this direction, in x direction. So we know that we suppose that, or we can assume that the distance between these two potential is equal to the a. The two potential well is equal to a. So when electron moving from this potential well to this one, then at that time how much distance it covers a. So this is x distance, it covers a distance. So what is the next distance? It is a x plus a. So here what is the potential? It is a vx, but because it is a periodic potential well, so vx potential is equal to a potential of x plus a. So the vx, we can say that the potential at x distance is equal to the potential at x plus a distance, because this is the potential well. Now what is a is the periodicity of the potential well, or we can say that it is a intermolecular distance of the inside the crystal. Now the Schrodinger wave equation for a moving electron is, as we know that the electron is not going to change the energy with respect to time, and so that we are using the time independent Schrodinger wave equation, and you know that this is the time independent wave equation. So for this equation in a periodic potential well, where the v psi, this vx is equal to vx plus a, the Schrodinger gave this equation, the solution of this equation given by the Schrodinger. And what is the solution? Psi x is equal to e raised to power minus I kx, uk is equal to x, where this ukx is known as a Bloch function, and this whole statement is known as a Bloch theorem. Okay, this whole statement psi x is equal to e raised to power minus kx, ukx is equal is known as a Bloch theorem. Okay, now what is this uk's? Uk's is again a function, and this function is equal to what? This ukx is equal to ukx plus a. Now the second statement of this theorem, there is a second statement also of this theorem, and that is equal to the psi x plus a is equal to psi e raised to power I ka. Now how it will become? Simply, if you are going to be you are suppose that
uh, at the position of psi x, because we are just a minute. Yes, okay. So if suppose that this is the psi, it is a function of a uh, one electron which is moving inside the periodic potential at position x. Okay. Eh, Now, suppose that it is because electron, what electron is doing, electron is moving in a periodic potential, and we know that periodicity means that the simple example of periodicity is the circle. So when the electron is moving in a periodic potential bed, it means that it is moving in a circle. Okay. So in this circle, because it is a periodicity of potential, that's why I form here a circle of atom. Okay. So there are how many atoms? Suppose that 5 atoms. So the first atom having a wave function psi x. Okay. And the distance between these two atoms, suppose that it is a. Okay. So after moving from first atom to the second atom, the function is changed. Why? Because position is changed. Now this position is x, and this position is become x plus a. Therefore, the psi is equal to the x. Here the value of psi is x plus a. Okay. Now what happened? Because whatever the potential is here at for one atom is equal, the potential, same potential is bear by the atom 2. Therefore these two functions are equal, but these two functions are equal on if and only if by a when we have applied some potential. Means we can say that psi x plus a is equal to psi x, sorry, psi x, if and only if when there is some coefficient, and suppose that coefficient is c. The coefficient is c. So this psi x plus a is equal to psi x only by one coefficient, and that is the c. Now our particle is moving from second to the third. So in that condition, the total distance covered by the particle is again an a. So here a, here also a. So the total distance covered by the particle is 2a. So now our functions become psi x plus a multiplied by x plus not only a, that x plus 2a is equal to psi x. But because again particle move from second position to third position, cover the a distance, therefore, or the coefficient is now first time we are using the c coefficient, it means that again we are using a c coefficient, and so c e multiply by c psi x. Okay, this is the next position. C multiply by c becomes what? C square. C square psi x. Okay. So when particle move from first to second and second to third, means that when it's complete two when it's moved two times, its function psi x plus 2a is now equal to c square by psi x. Okay, means if a particle cover two times the distance between the two particle, earlier twice cover the particle cover twice distance, then the coefficient getting the square. In this way, if particle come from this way to this way, suppose that this is the third to fourth, then here the how many times, how much distance is covered? Three times of a cover. That's why the value of c is now c, the power of c is become c cube. Similarly, suppose that this is the nth electron. This electron is the nth electron. So the total distance covered by the total distance covered by the particle is the psi n. Now up this
from this nth to again particle, because this is the periodic potential well. So after completing the one circle from nth, suppose that up to nth particle, again it's come to the first particle. So here the value, what is the value of psi n? The value of psi is equal to psi x plus na, n a. Okay. Now particle move from this nth position to the xn position back. So that's why this psi na is equal to psi x, if and only if it is multiplied by a coefficient e raised to the power n. Okay. Now c raised to the power, but when we are moving, means nth particle say we move towards the first particle, again we come back to a first particle, it means that these two things are equal. The मतलब ये x प्लस एन ए जब तक एक्स एन के बराबर नहीं हो जाए, एक्स साई एन के बराबर नहीं हो जाता, हो जाएगा तभी तो वो वापस हम इस पे आ पाएंगे साई एन पे, है ना। यानी साई एक्स प्लस एन ए इज इक्वल टू साई एक्स होना चाहिए, मतलब सी एन की वैल्यू उस कंडीशन में कितनी हो जानी चाहिए, 1 होना चाहिए, तभी ये साई एक्स एन ए वापस किस पे आ पाएगा, साई पे आ पाएगा। सो एज वी यू नो दैट सी एन, सी टू द पावर n is equal to 1, suppose that in such a condition, ठीक है। तो c to the power n is equal to 1 होगा, या फिर हम कह सकते हैं c is equal to root of n times 1। ओके। और ये रूट 1 की जो वैल्यू होती है वो हम सबको पता होती है, इट इज इक्वल टू दी e raised to the power I k I सम कांस्टेंट कह सकते हैं, कांस्टेंट I k a, या क्योंकि a डायरेक्शन a बार मूव कर रहा है और x डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, I a k, ठीक है। ओके, के क्या है, इसका मूवमेंट है, कांस्टेंट है, ठीक है। और ये किस लेटेस्ट डिस्टेंस कितना मूव कर रहा है, ए डिस्टेंस से मूव कर रहा है, ठीक है। तो ई टू दी सी रेस्ट पावर कितना हो जाएगा, आई ए के, ठीक है। अगर ये नहीं आता है तो थोड़ा सा इसको पढ़ के देखना है ना, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा हो थोड़ा ध्यान देना, ठीक। तो इंस्टेंट ऑफ राइटिंग द सी पावर एन, हम क्या लिख सकते हैं, ई रेस्ट पावर आई के ए, ठीक है। सो इस कंडीशन में हमने क्या पाया, हमने ये पाया कि ए साई एक्स प्लस एन ए इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर आई ए के मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, साई एन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या बना रहा है, ये हमारी बना रहा है सेकेंड जो सेकेंड प्रॉपर्टी है, या कहें कि सेकेंड फॉर्म है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ब्लॉच थ्योरम को, उसे बना रहा है, ठीक है। तो सेकेंड फॉर्म क्या बोलता है कि साई एक्स प्लस ए इज इक्वल टू साई एक्स ई रेज़ टू पावर आई ए के होगा। अगर इसको थोड़ा, अगर इस वाले फंक्शन से भी इसे सॉल्व किया जा सकता है। इसे सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका ये है, यहाँ पर x प्लस ए रख दो, तो यहाँ पर x प्लस ए हो जाएगा, फिर e की पावर में क्या आ जाएगा, x प्लस ए आ जाएगा। एंड एज यू नो दैट द पावर्स दोनों की जो है ई रेज़ टू पावर आई एक्स प्लस ए, जो x है और a है वो एडिशन में, तो दोनों को मल्टीप्लीकेशन में पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी यहाँ लिख सकते हैं e की पावर आई के एक्स मल्टीप्लाई बाय ई की पावर आई के ए, ठीक है। अब आई के ए और आई के एक्स, ई रेज़ टू पावर आई के एक्स और यू के, ठीक है। मैं इसको एक बार आप लोगों को ऐसे सॉल्व करके भी बता देती हूँ पेन की हेल्प से, ठीक है। अगर इसको कैसे लिख रहे हैं, आई ई की पावर और के इट्स के और ए, ठीक है, ये लिख सकते हैं। और एक क्या लिख सकते हैं, ई की पावर आई के और क्या लिख सकते हैं, एक्स, ओके, ठीक है। सो ई की पावर यू के और यू के एक्स से थर्ड इक्वेशन के हिसाब से क्या लिखा जा सकता है, ये वापस लिखा जा सकता है यू के एक्स, ओके।
ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ ब्लॉच थ्योरम, ई रेज़ टू पावर आई के एक्स यू के एक्स की वैल्यू किसके बराबर होती है, साई एक्स के बराबर होती है। तो ये दोनों टर्म जो हैं वो किसके बराबर हो जाएगी, यहाँ पर साई एक्स के बराबर हो जाएगी। ओके, सो हम ये कह सकते हैं what we can say that psi x plus a is equal to exponential I k a multiplied by psi x. So this is and we can write it is this expression like that also, where q is nothing but it is equal to the exponential I k a. Okay, so what is this? This is the statement of Bloch theorem. So there are we getting the two statement. One is given by the equation number 2 and another one is given by the equation number 3. Okay, now I'm just about the new thing, that electron as a here we have discussed about the electron as a independent electron which obey the Schrodinger equation for a periodic potential is called the Bloch electron. ठीक है, or we can say that the electron which obey the Bloch theorem in a periodic potential, that type of electron is known as a Bloch. That type of electron is known as a Bloch electron. Okay, so just I want to discuss one thing to you people. एक चीज जो यहाँ पर डिस्कस करनी है, this is the this thing is given in the book. Okay, whatever the book you are referring, उसमें ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो उसमें इस बुक को देखिएगा, यहाँ तक तो ये सारा स्टेटमेंट वैसे ही है जैसा मैंने आप लोगों को पढ़ाया। ठीक है, नीचे तक का स्टेटमेंट भी लगभग सेम है, बट यहाँ जब सोल्यूशन हुआ है, ये जो सोल्यूशन किया है इसमें एक थोड़ी सी गलती है, और एक इसने यहाँ पर भी थोड़ा गलत लिखा है, फंक्शन ऑफ द टाइप 3 इज कॉल्ड द ब्लॉच। अब टाइप 3 यहाँ क्या दिख रहा है, कुछ भी नहीं है, टाइप 3 तो कुछ भी नहीं गिवन है। सो टाइप 3 एक्चुअल में इसके लिए कहा गया है, इस फंक्शन के लिए यूके एक्स की बात की गई है, यूके एक्स को इसने कहा है। और इसको भी थोड़ा सा सॉल्व करके देखो, यहाँ पर ये गलत आ रहा है, ई रेज़ टू पावर के एक्स ए होना चाहिए था, एक्स नहीं होना था। ठीक है, यहाँ पर वो भी ध्यान देना। ठीक है, यूके का यहाँ पर, ठीक, और फिर उसके बाद में उसकी जगह पर ये इन दोनों को जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पर साई एक्स आना चाहिए, वो भी नहीं यहाँ पर दिखाई दे रहा है, साई एक्स भी यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि इन लोगों ने एक्स से इसको सॉल्व किया है, तो यहाँ पर इसने गलती की हुई है। ठीक, तो इसको जब सॉल्व करोगे, बुक से भी सॉल्व करते हो, तो बुक में होने वाली गलतियों को थोड़ा सा ध्यान में रख के पढ़ाई करना। जो मैंने पढ़ाया है इस वीडियो को थोड़ा एक बार देखना और फिर उसके बाद देखना। सो मैं हाईलाइट कर दे रही हूँ 2 पॉइंट्स जो हैं जो गलत लिखे हुए बुक के अंदर है, एक यहाँ पर गलती है, एक यहाँ पर गलती है। ठीक है, और यहाँ इस सेंटेंस के बाद यहाँ भी ये जो फंक्शन लिखा हुआ है ये भी गड़बड़ लिखा है, तो ये सब चीजों को जरा ध्यान देना। यहाँ पर ये वाला, इसका पीछे जब सोल्यूशन देखोगे तो सब समझ में आ जाएगा। ओके, सो आज हम लोग ने ब्लॉच थ्योरम का स्टेटमेंट कंप्लीट कर लिया है। ये 4 मार्क्स में आता है। ओके, 4 मार्क्स में आता है, कभी कभी 7 मार्क्स में भी आ जाता है ये स्टेटमेंट पूरा लिखने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट में अगर होगा तो ब्लॉच थ्योरम का सोल्यूशन करेंगे, और नहीं तो फिर श्रोडिंगर इक्वेशन पे ध्यान देंगे। ये थैंक यू स्टूडेंट।